So with that, we will begin our discussion. And the one first question that I have for all the panelists is really connected to the theme, the broad theme of the dialogue today, the Nourishing Now narrative that we are trying to build and we are trying to explore. What I would like to ask is, given your experience, given the nature of work that you've been doing and your own personal journey, how do you connect with this narrative of Nourishing Now? And what do you think it means for you and probably for the world and in the climate change conversation? And we could start, and this question is for all the panelists, so we could decide who wants to go first. Okay, I can go first maybe. Just waiting for someone. It's like, okay, maybe it's time to dive in. So thank you again for having me here, and बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके यहाँ पे. पर जब मैं नरिशिंग नाउ डायलॉग के बारे में सोचती हूँ, आई थिंक पहले तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज के रेफरेंस में इसका मतलब क्या होना चाहिए, राइट? बिकॉज दैट्स आई गेस द मेन एम ऑफ इट एज वेल. तो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाह रही थी. जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो है कि क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें देन थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं. लेकिन बहुत सारा जो उसके ऊपर टॉपिक्स भी होते हैं, वो जैसे अभी हमने शेयर किया, कार्बन क्रेडिट, कार्बन सिंक, emissions, 1.5 degree Celsius rise, ice caps melting, all of that kind of stuff थोड़ा सा ऊपर से निकल जाता है, समझ में नहीं आता है कि डे टू डे हमारा उससे रिलेशनशिप क्या है. सो आई थिंक जब मैं अपने लिए और हम लोग अपनी टीम्स के लिए भी थोड़ा उसको इंटरप्रेट करने के लिए कोशिश करते हैं, हमें आई थिंक दो चीजें समझ में आती हैं. एक तो हुआ ऑफ कोर्स कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हमारे डे टू डे में क्या है, राइट? जैसे हमने भी कुछ चीजें पढ़ी कि एनर्जी एफिशिएंसी को देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, राइट? वेस्टेज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कैसे है, हम क्या फ्यूल यूज कर रहे हैं, उस सब के बारे में ध्यान रख सकते हैं. बट देन द अदर एस्पेक्ट इक्वली एंड इवन मोर इम्पोर्टेंट हमारी जैसी कंट्री के लिए, विच इज सोशल सस्टेनेबिलिटी. सो ऑफ कोर्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इज कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो किसको इम्पैक्ट कर रहा है. जैसे अगर हम अभी कोई फ्लड की बात करें, हीट स्ट्रेस की बात करें, आजकल 45 डिग्रीज कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को वो डिस्पैरिटली अफेक्ट करता है, राइट? हम लोग जैसे अभी मैं बाद में भी एग्जांपल देना चाहूंगी इसका, लेकिन बहुत सारे लोग जब आउटसाइड टेम्परेचर रेनफॉल हो रही है 35 डिग्रीज 32 डिग्रीज हो गया है, वो लोग सिर्फ 40 डिग्रीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि उनके टिन शीट के घर, राइट? सो द अदर एस्पेक्ट इज कि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो लोगों को इक्वली इम्पैक्ट नहीं करता है, तो सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात उसमें आ जाती है और अडेप्टेशन और रेजिलियंस की बात आ जाती है. तो हमारे लिए जब नरिशिंग नाउ की बात हुई है, सो आई थिंक लाइक हम लोग जब इंटरनली भी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये डायलॉग थोड़ा वैल्यू सिस्टम से समझें, बिकॉज सोल्यूशंस तो चेंज होते रहेंगे, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स भी चेंज होती रहेंगी. तो कैसे हम अपने अंदर कुछ वैल्यूज कल्टिवेट करें जो हमें इंट्रिंसिकली ऐसा थॉट प्रोसेस देगा कि हम हमेशा सोल्यूशन फाइंडर्स बन जाएंगे. सो थिंक 3 थिंग्स दैट वी कीप इन माइंड इज, वन थिंग इज कंपैशनेट. आप एनवायरमेंट के लिए कंपैशनेट हो, दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए कंपैशनेट हो, एनिमल्स के लिए कंपैशनेट हो, वेजिटेशन फॉरेस्ट के लिए कंपैशनेट हो. सो हाउ डू वी रियली इनकलकेट दैट वैल्यू? सेकेंड इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल. जब क्लाइमेट की बात होती है तो हम एविडेंस की बात करते हैं, एक्टिविज्म की बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं, लेकिन सॉल्वर्स कौन है? हमें टाइम हो गया है कि हम सब मान ले कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेट्स ऑल गो टुवर्ड्स कि हम सोल्यूशन कैसे उसके लिए डिजाइन करें. सो वी हैव टू बी एंटरप्रेन्योरियल. जो भी दिमाग में आ रहा है चलो करो, सीखेंगे, उससे कुछ गड़बड़ होगा तो होगा, लेकिन सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे. एंड द लास्ट पार्ट इज मोर इन टर्म्स ऑफ क्यूरियोसिटी, कि हमें कॉन्स्टेंटली ये क्वेश्चन कि हम उसको बेहतरीन कैसे करें. इसमें अभी हमने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी समझी थी, अभी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी समझी थी, अब सोशल सस्टेनेबिलिटी समझी थी, अब हम डिसेबिलिटी को लेके आएंगे, अब हम जेंडर को लेके आएंगे, अब हम ट्रांसजेंडर को लेके आएंगे. तो वो क्यूरियोसिटी हमेशा कैसे रहे. तो creating like an environment, I think for that nourishing now on climate change, the base of it has to be, a youth and a system which is solution oriented
and which is entrepreneurial and which is value based, which is learning based. So I think as long as we do that, no matter what role we play, अगर हम बैंक में फाइनेंसिंग कर रहे हैं, अगर हम इन्वेस्टर हैं, अगर हम इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, डिजाइनर हैं, इस थॉट प्रोसेस से हम सोल्यूशन प्रोवाइडर्स बन सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए. सो दैट्स जस्ट आई थिंक लाइक what I feel is extremely important कि हम Nourishing Now को learnings और values के lens से देखें थोड़ा, and then it becomes more actionable for all of us. Thanks, Rachita. I think very well said. Also trying to place climate change as part of many other conversations and in the larger context, and not making it a separate conversation disconnected from what we are otherwise experiencing or doing. So very valid there. Thank you so much. Can I invite any of the other panelists to share their thoughts? Sandeep. So जब हम Nourishing Now सोचते हैं, और rather जब मैं सोच रहा, the first thought that comes to my mind is जो हमने कभी स्कूल में पढ़ा था ना, Maslow's theory, और उसमें जो हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स की, कि सबसे पहले खाना, फिर पीना, फिर सोना, राइट. एंड ये तीन चीजें जो हमारे हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, अगर वो इफेक्ट होता है, और उसके इफेक्ट होने का एक बहुत बड़ा रीजन आज एनवायरनमेंट है, वेदर इट इज द हीट, वेदर इट इज द रेन्स, तो उससे हम कैसे, किस तरीके से उस चीज को एड्रेस करें, उस सोल्यूशन को समझे. रचिता ने बहुत अच्छी बात कही, शी स्पोक अबाउट सोल्यूशन, राइट, जिसका एक एंगल जो probably during the course of the discussion I would like to highlight is कि जब कुछ होते हैं जो प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट, वो प्रॉब्लम सभी के लिए होते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम स्पेस, और कुछ होते हैं जो सोल्यूशन सोच सकते हैं. मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि हमें एंटरप्रेन्योरियल नहीं होना चाहिए या हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब कुछ लोग होंगे जो सोल्यूशन को ड्राइव कर सकते हैं, और उसके बाद एक बहुत बड़ा मास होगा जो उस सोल्यूशन को अडैप्ट करेगा. When we are able to break it down and fragment it into pieces of problem space, solution space, and adaptation space, that fuels the Nourishing Now fundamental about the environment change. So in a nutshell, shayad, that's what I feel Nourishing Now is. Great, absolutely, Sandeep. Ashpreet, Prachi. Yeah, sure. Happy to. Thank you for inviting. Definitely, ye gathering काफी. And sorry, I think someone was on mute. So already दो लोग already ये highlight कर चुके हैं कि solution based approach या action oriented approach है जो आगे जाके हमें हेल्प करेगी. ये बात हम पहले भी कर रहे थे, थोड़े दिन पहले हम सब मिले थे, हमने कहा था कि ये जो प्लैनेट है, ये जो अर्थ है, जहां पर हम अभी हैं, देयर इज ओनली वन प्लैनेट, देयर इज नो प्लैनेट बी, और ये बोरोड प्लैनेट है. ये हमने जो आगे फ्यूचर जनरेशंस है उनसे ली हुई चीज है, उनसे मांगी हुई चीज है. तो ये चीज हमें वापस ऐसे करनी है कि ताकि वो आगे जाके रह सके, लेकिन यही प्लैनेट में हमें अभी भी रहना है. सो वैलिड पॉइंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यू ऑन हाउ सॉल्यूशंस नीड टू बी पुट इन प्लेस. तो इंडिविजुअल मेजर्स की अगर बात करें, हम लोग एक स्टार्टअप हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम ट्रकिंग कम्युनिटी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें, आप इनको चलाएं रास्ते में, चाहे आपकी अमेजोन डिलीवरी हुई, फ्लिपकार्ट डिलीवरी हुई, पेरिशेबल्स हुई, फार्मर्स जो डिलीवर कर रहे हैं, अगर उसको आप क्लीन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से डिलीवर करेंगे तो आगे जाके द एनवायरनमेंट विल गेट बेटर. जब आसमान साफ दिखेगा, जब हम जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं वो साफ होगा, तब आगे जाके हम ऐसे सिचुएशन में रह पाएंगे जहां हम कह सकेंगे कि हाँ, हमने एक्शन लिया एज एन इंडिविजुअल और उसका इम्पैक्ट हमें दिखा. तो उसमें मैं 2-3 चीजें और ऐड कर दूंगी. जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं तो आप मेट्रोज और ये सब ले सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप कॉन्शियस डिसीजन ले कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही ट्रैवल करूंगा या करूंगी,
वो भी एक स्टेप होता है। ब्लू स्मार्ट फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, जब आप वो कैब में बैठते हैं, जब वो आप कैब लेते हैं, अभी उतना ही कैब बाकी ओला उबर भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब आप मेट्रो भी लेते हैं, जो CO2 emissions आप रिड्यूस कर रहे हैं, दैट इज योर डूइंग. You are making that conscious effort. So collectively, we need to make that conscious effort to make sure that we choose efficient modes of transport. Light bulb वगैरह जो आप घर पे यूज कर रहे हैं वो भी efficient रहे, पानी आप सोच समझ के यूज करें. ये छोटे छोटे steps होते हैं, लेकिन going forward it helps. So these are few points that I wanted to highlight, but at the same time, circular economy, ये बहुत बड़ा लगता है सुनने में कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है. ये आपके और मेरे इसमें भी है कि अगर मैं 10 रुपए डाल रही हूँ, तो मैं कैसे उसको यूज करूं कि उसका फुल यूज हो सके, और जो खरीदा है मैंने उससे उससे मैं ठीक तरह से यूज करके वेस्ट ना करूं, वो वेस्टेज में ना जाए, मैं उसको फिर से यूज कर सकूं, रिसाइकिल कर सकूं. दैट इज एज सिंपल एज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी. तो अगर ये हम अपने लाइफ में एंटरप्रेन्योर जर्नी में, चाहे हम स्टार्टअप्स में करें, जायंट्स में करें, this is something that will go a long way. And I'm sure likes of Prachi जो यूथ एम्बेसडर है, ये है जो ये पॉइंट ऑफ व्यू हम सब जो कहना चाह रहे हैं आगे अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल में स्प्रेड कर सकते हैं. So this is what I wanted to highlight. थैंक यू अशप्रीत. आपने सपना दिखा दिया वापस से, वो नीला आसमान एक दिन दिखेगा. And I just got reminded of something, a conversation that was happening at home yesterday. My 12-year-old suddenly said, Mama, why don't we have 1 day of lockdown every week now? And I was like, why? Like, because the sky was so clean at that time. And you know, so it's probably वो नीले आसमान के सपने में के कारण ही शायद बहुत सारे लोग अपनी choices बदलना शुरू कर दे. So yeah, thank you so much for bringing that up. Prachi, over to you. Hi everyone. First of all, thanks for having me. I'm very excited. So the Nourishing Now perspective was very exciting to me when I first got to know about the idea of Nourishing Now to prevent the frightening future. I took a moment and thought about it, because I thought, wow, that is the way to think. For a long time, because I have had a connection with the nature, and even the NGO that I work with is working in close connection with the animals, with the plants. And for a long time, I have seen a lot of problems. Like, ठीक है, मौसम बदल रहा है, तो इससे इन जानवरों को ये प्रॉब्लम हो रही है, क्रॉप्स में ये प्रॉब्लम हो रही है, प्लांट्स ऐसे इफेक्ट हो रहे हैं. तो for a very long period, the approach was very problem focused. I knew all the problems. ठीक है, ये दिक्कतें हो रही है, मैं प्रॉब्लम सारी पता है, but I was very confused कि what I as an individual can do that. Okay, well, I turn the light switch off, but is that enough? Is it enough, really? Are we? Because the things that we know is a very fixed set of lists. Like, okay, turn the light switch off, do this, do that. But if it was working, then we wouldn't have been here. So I think, I think for a very long period, I was confused that I, as an individual, what can I do except for worrying? And there were only two narratives for me. One was like, okay, it's not so bad. It's probably not so bad. It can get much worse. And on the other side, it was like, oh my God, the world is ending. So both of them were very stressed, because like, if the world is ending, then what can we do? क्या ही फायदा अभी कुछ करके. But at the same time, अगर अभी इतनी problems नहीं है, तो ठीक है, कल कुछ कर सकते हैं. So I think in the middle of that, this is the Nourishing Now. The Nourishing Now narrative is in the middle of that. Okay, it's not so bad, but it could get much worse if we don't do anything right now. And I think this led to a perspective change for me. And I think a lot of people that I know of, or that I am surrounded with, need to have this perspective, to have a solution-based mind, like we were talking about it, to think of solutions instead of the problems, because we can, there will be not enough time to talk about the problems. We can keep talking, but unless we think of how we can make things better. And as a young person who needs to do things, I was very worried for a long period of time, because I have all this passion and I have all this energy, but
are you not doing enough? So I think this perspective is very good. Thank you so much, Prachi. Hats off to young people like you who think that since I have the energy, I will use it for all the right things. And we need a lot of young people like you. But I also echo your sentiment. I think I have a lot of people around me. I am that person, and I'm sure you represent, the young people who continuously feel this way. कि ये दो तीन जो सब वेबसाइट्स में लिखा रहता है, मैगजीन में लिखा रहता है, बिलबोर्ड्स में लिखा रहता है, वो दो तीन काम करने से हो जाएगा क्या? Or on the other end, is it's an unsolvable problem. I, as an individual, can't do anything about it. So why bother? So ये जो दो extremes के बीच में हम जूझते रहते हैं, all of us, and we don't know which way to go, where the solution lies. Yes, I think that's exactly why we are all here. And hopefully by the end of this conversation, we would have, if not found all the solutions, it's not possible, but at least found some hope at the end of this conversation today. I just want to remind everyone कि हम ये चर्चा जो कर रहे हैं, हमने लास्ट 20 मिनट रिजर्व करके रखे हुए हैं सवालों के लिए, ऑडियंस क्वेश्चंस के लिए, और so please keep writing your questions in the chat box, keep sending us your questions, and सारे questions एक बार में लास्ट में लेंगे, so that we can have a good discussion and then the question answer round. Yeah. So from all that I heard, and various very important perspectives and aspects of this whole issue of climate change, and more importantly, the Nourishing Now narrative. My request to all the panelists is, because you come from such diverse and such rich experiences, आपके जिंदगी में और आपके अभी तक के एक्सपीरियंस में क्या कुछ ऐसे केसेस या ऐसे कोई आपने चीजें होते हुए देखी हैं, एनी एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस जो आप इस ग्रुप के साथ शेयर कर सकते हैं, which actually convinces us that Nourishing Now narrative बन रहा है, बन सकता है, it exists and it is possible. ये दो एक्सट्रीम्स जो प्राची ने भी हमें बताया कि यही दो एक्सट्रीम्स नहीं है, जो बहुत सारा काम है वो एक्चुअली नरिशिंग नाउ बिलीफ सिस्टम पे हो रहा है. ऐसी कुछ कहानियां क्या आपके पास, आपके एक्सपीरियंस से आप निकाल के इस ग्रुप के साथ शेयर कर सकते हैं? We could start with whoever is ready. Yeah. So मैं एक्चुअली दो इनिशिएटिव्स के बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाह रही थी, एंड जस्ट आफ्टर आई स्पीक अबाउट देम मैं जिस चैट बॉक्स में थोड़ा लिंक भी डाल दूंगी ताकि जो इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं वो थोड़ा उसके ऊपर देख सके. तो अभी हम गर्मी के मौसम में हैं, मैं पहले भी बोल रही थी कि दैट हैज बीन अ क्रिटिकल थिंग, क्योंकि जब हीट स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है तो सबके एनर्जी बिल्स ऊपर जाते हैं, लेकिन एनर्जी शॉर्टेज भी होती है, तो पावर कट्स भी होते हैं. लेकिन आई थिंक लाइक कुछ सालों पहले जब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना शुरू किया था एनर्जी की तरफ से, तब हमें किसी ने बताया कि दिल्ली में एक स्टडी हुई थी जिसमें जब गर्मी होती थी तो सारे एनजीओ स्लम्स में जाते थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के यहाँ जाते थे, बिल्डर्स के यहाँ जाते थे और बोलते थे आप ट्राई करिए कि सुबह काम शुरू करें लेकिन आफ्टरनून में ब्रेक दें, बिकॉज आफ्टरनून में सबसे ज्यादा गर्मी है. आप सब लोग को प्रमोट करें कि अंदर इंडोर रहे जहाँ पे थोड़ी सी ठंड होगी, छाया होगी. लेकिन जब उन्होंने ये करना शुरू किया और काफी इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आए, उन्होंने एक्चुअली क्या हुआ कि अंदर घर में इंडोर हीट स्ट्रेस की वजह से डेथ्स हो रही थी, राइट. एंड दैट वाज अगेन बिकॉज हमारे जो सारे स्लम्स हैं, हमारी काफी वर्क स्पेसेस हैं, वो इंडोर हैं लेकिन वो मेटल शीट से बनी हुई है, कोई लाइट, कोई उधर विंडो नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, एग्जॉस्ट फैन नहीं है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये फूड प्रोसेसिंग स्ट्रीट वेंडर्स ऐसी या मशीन्स यूज कर रहे हैं जिससे हीट जनरेट भी हो रही है, तो ऊपर से हीट आ रही है, अंदर से हीट आ रही है, बीच में लोग वहां फंसे हुए हैं. तो हम लोग ने जब इस काम पे काम करना शुरू किया और सोचना शुरू किया, तो एक तरह से आप सोच सकते हो कि ये इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, राइट. सो एक तरह से आप सोच सकते हो कि कितने लोग, हम लोग अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या इंजीनियर की तरफ से काम करते हैं, कितने लोग हम सोचेंगे कि लाई कैसे बनती है, पफ राइस कैसे बनता है, उसकी मशीन पे काम कर देंगे. कितने लोग सोचेंगे ना. फूड प्रोसेसिंग में सिवाई कहाँ से आती है, सिवाई की मशीन होती है, राइट. फूड प्रोसेसिंग की मशीन होती है जो स्लम्स में लोग यूज करते हैं, वहां से हमारा खाना आ रहा है, राइट.
ये इंजीनियरिंग इश्यूज हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। द अदर एस्पेक्ट इज कि अगर हम वो सॉल्व कर दें तभी भी हीट स्ट्रेस का इशू सॉल्व नहीं होगा। अगर हम वहां पे जाएं और बोले इंजीनियर की तरफ से सोच रहे, तो हमने एयर कंडीशनर लगाया, एग्जॉस्ट फैन लगाया, एयर कूलर्स लगाए, उससे क्या होगा, आपका एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा। एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा जिसकी वजह से हमें पावर प्लांट चाहिए, उससे भी पोल्यूशन होगा, राइट। सो दैट्स वेयर वी सेड आर्किटेक्ट्स आओ, राइट, आर्किटेक्ट्स आओ और हम बिल्डिंग डिजाइन करेंगे ऐसे जिससे आपका एनर्जी कंजम्पशन पहले कम हो और उसके बाद हम उसे टेक्निकली अप्लायंसेस लाके सॉल्व करेंगे कूलिंग की तरह से, राइट। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से हियर आल्सो कि हमने शुरू किया धारवाड़ में, हमने शुरू किया उड़ीसा में, हमने 10-15 लोगों के साथ ऐसे काम करना शुरू किया, एक्चुअली सॉल्यूशंस मूव आउट करे। दिस वाज अबाउट 2 years बैक, कोविड के बीच में ये सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ रही थी। उसके बाद लेकिन अगर हम अब बात करें तो हमारा टारगेट है, हम एक्चुअली 20,000 ऐसे लाइवलीहुड यूनिट्स को अपग्रेड करने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें हमारे पास नॉट जस्ट आर्किटेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ये सॉल्यूशंस को एक्चुअली डिप्लॉय कर रहे हैं, बैंक्स हैं जो पार्टनर कर रहे हैं कि हम फाइनेंस करेंगे ऐसे बिजनेसेस को अगर वो ऐसे सॉल्यूशंस ला रहे हैं या ऐसे सॉल्यूशंस अडॉप्ट कर रहे हैं, पॉलिसी लेवल के साथ काम कर रहे हैं कि कौन से पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि ऐसे सॉल्यूशंस एक्चुअली स्लम्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, एमएसएमईज में जा सके। तो ये अगर हम ट्रैजेक्टरी हमेशा देखें कि कैसे हम कम्युनिटी के साथ काम करें, क्या है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद सोल्यूशन डिजाइन करें और फिर उसको स्केल करें, दैट्स द काइंड ऑफ अप्रोच दैट वी एक्चुअली नीड टुडे। The other thing I also wanted to share was हमने एक साल पहले कैटलाइज टेक करके प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, क्योंकि हमारा ये था कि हम बीएमएस में जाते थे, आईआईटी में जाते थे, सारे लोग बैठे हुए, क्योंकि प्राची आपने सही बोला, एक तो है कि हम अपनी चॉइसेस क्या मेक कर रहे हैं, डे टू डे क्या चॉइसेस कर रहे हैं उसको देखें, which machine are we buying, can we walk, can we take an EV, but then the other aspect is हमारी skill भी है, how do we give skill to this aspect of climate change and solving for climate change, right? That is what the climate sector needs the most, right? So when we actually went into these colleges, we said अगर students को अगर हम business पढ़ा रहे हैं, वो सोचते भी नहीं कि डेयरी फार्मर के साथ कैसे बिजनेस कर सकते हैं, राइट, फार्मर्स के साथ उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट। सो अगर हमें ये सब बात करनी है तो हमें एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जिसमें ये अपॉर्चुनिटीज भी विजिबल होनी चाहिए, स्पेशली फ्रॉम एन इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव इज व्हाट वी स्टार्टेड। तो हमने कैटलाइज एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जाते हैं अपॉर्चुनिटी की तरफ से। अगर आपके पास सोल्यूशन है, आप आओ, वी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम मोर एंड सॉल्व इट विद यू, राइट। यू गेट 200 people who are part of our team who will solve it with you. The other thing that we do is launch catalyze tech challenges every few months, जिसमें आप आइडिया के साथ आ सकते हैं। वो आइडिया स्टेज में हो सकता है, आप ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं जो सोच रहे हैं कुछ नया करना है पर उसके लिए पैसा नहीं है, और अगर आपके पास वो आइडिया है हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आइडियाज बहुत सारे हैं आप लोगों के पास, लेकिन कौन उसको सपोर्ट करेगा, right? So those were 2 experiences that I wanted to share, because of which we're really able to bring solutions, prove it on the ground and scale it from there on, and that's the way that we need to go forward. Wonderful. Rachita, the hope that I see from what you shared is that everyone actually can have a role to play if we all start thinking of ourselves as climate change practitioners, activists, contributors, no matter which profession or background we come from. And I think that's the lens we all need to start wearing, and probably our training and education also needs to start, including all of that. Wonderful. Ashpreet, Sandeep, Prachi. Sure, I can just pick up from where Rachita left. Skilling के बारे में जब बात करें तो हम लोग भी एज एन OEM, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो व्हीकल्स बनाते हैं, दे शाई अवे फ्रॉम दिस, वो स्किलिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। बट एज अ स्टार्टअप हमने ये कॉन्शियस कॉल लिया था, जहां हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर रहे हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर रहे हैं, हमने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, आपके एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं,
वोकेशनल ट्रेनिंग है, उसमें आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जितने क्लीन एनर्जी या टेक्नोलॉजी वाले व्हीकल्स हैं उन सब का इंक्लूड करें। आप OEMs के साथ टाई अप करें, हम उन्हें ट्रेन करेंगे अपनी फैक्ट्री में, जितने लोगों को हम हायर कर सकते हैं करेंगे, बाकी को सोसाइटी में वापस भेज देंगे जो बाकी जगह जाके जॉब्स आसानी से ढूंढ सके। ये एक पॉइंट था। और सेकंड पॉइंट था जो जेंडर का जो इशू है, अभी भी सबको लगता है कि हाँ ठीक है जेंडर पैरिटी आ गई है, बट कोई जेंडर पैरिटी आई नहीं है टू बी ऑनेस्ट। आप पंजाब जैसे इसमें देख लीजिए, हमारा जो फर्स्ट फैक्ट्री है वो बन्नूर में है, वो एक विलेज है पंजाब में, कैश रिच विलेज है, वहाँ फार्मर्स के पास बहुत पैसे हैं, तो वहां वो अपने औरतों को घर से निकलने नहीं देते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें एक जेंडर न्यूट्रल फैक्ट्री बनाई थी जहां पे हर कोई एक साथ काम कर सके, आदमी हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर हो, जो भी हो। लेकिन वो हमसे हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि सोसाइटी का जो माइंडसेट है, जिस तरीके से लोग सोच रहे हैं वो नहीं बदल पा रहा है। तो अवेयरनेस कैंपेन्स की जरूरत है। हम स्टेट से बात कर रहे हैं कि आप ये अवेयरनेस कैंपेन्स करिए। 2-3 औरतें, आई कैन शेयर एन एग्जांपल, 2-3 औरतें आई थी ऑफिस, उन्होंने काम शुरू किया, तो सरपंच आ गए वहां पर और 10 गाड़ियां लेके आए। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक है, वो पॉलिटिकल टैक्टिक है कि नहीं आप हमारी औरतों को घर से क्यों निकाल रहे हैं। जब हमने ट्रांसजेंडर्स को हायर किया तो फिर आ गए ये कहने के लिए कि ये और हमारे लड़के साथ में काम क्यों कर रहे हैं। दिस इज अ बिग स्टेटमेंट। सो माइंडसेट चेंज इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। पूरी इंडस्ट्री साथ में है, हम सब एक दूसरे को हेल्प करना चाह रहे हैं, हम यूथ को एम्पावर करना चाह रहे हैं। द एवरेज एज इन आवर ऑफिस इज 24। तो 24 साल के बच्चे are actually making these vehicles, and so this is what is required, just these 2 points, and from my personal experience, that together as a community we need to work together. Absolutely. And once they become a part of this as just vocation, or in the production process, they tend to also become ambassadors of the idea. So it's a great, I think, way of incorporating it. Sandeep, you have Sure. So when I think of climate change and I go back to my childhood, right? तो बचपन में, because I come from a hill station, तो बचपन में क्लाइमेट चेंज टीवी में देखते थे, डिस्कवरी एंड नैट जियो में दिखाया जाता था। एंड डिस्कवरी एंड नैट जियो में जब दिखता था कि बर्फ पिघल रहा है तो लगता था ये तो मेरा प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि बर्फ कहीं पिघल रहा है और हमारे यहाँ तो बर्फ है नहीं, तो शायद ये प्रॉब्लम से मुझे इफेक्ट नहीं होगा। टीवी वॉज द ओनली मीडियम, एंड थ्रू दैट मीडियम पता चलता था जितना भी पता चल सकता है। So media had I would say, a good role to play to inform. There is something called as climate change, and ये आपको affect करेगा। करते करते ऐसा हुआ कि मैं खुद ही मीडिया में आ गया, and तब समझ में आया कि the kind of role that media plays in generating awareness, right? लेकिन कहीं ना कहीं यस, मीडिया एक कैटलिस्ट जरूर है, एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, बट कहीं ना कहीं मीडिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उस चीज को बैलेंस रखे। वरना अभी कुछ देर पहले हमने बात किया था कि जो ऑपोजिशन क्रिएट होते हैं ना, बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट जस्ट सपोर्टिंग वन साइड, इररेस्पेक्टिव वेदर दैट साइड इज राइट और रॉन्ग, पोलराइजेशन होगा। Right? Even if we think that we support climate change because climate change is the need of the hour, then there are many forces out there which will come with scientific facts to counter you, right? And which is where empowering the youth to voice out their opinion becomes very critical. And thanks to digital as a medium, short video platform as a medium, one of the short video platform is where I come from, that today you have that opportunity कि आप अपने तरीके से अपने सोशल इश्यूज के बारे में आके कह सकते हैं, आके बोल सकते हैं। अब उस पे आपको कितना किस तरीके से आपको वो चीज बोलना है is where you need to be responsible, right? If the idea is कि लोग देखें, उसको लाइक करें, कमेंट करें, मेरा वीडियो वायरल हो गया और उसको और ड्रामेटाइज करें, then probably you are losing out on the essence.
So yes, you have a very, very powerful tool which is at your disposition. अब उस tool को use कैसे करना है वो बहुत critical रहता है, and there need to be proper some guardrails of sorts ताकि वो checkpoint रहे, वो moderation रहे. And second thing is that जब हम climate change की बात करते हैं, we also talk about sustainability, like how do we sustain climate change, and which is where three very important factors come to my mind. That yes, we need to think about planet, we need to think about people, and we also need to think about profit. Profit kahan se aata hai is a question that we need to ask. But if we say that we don't need profit, मेरा ये मानना है फिर sustainable भी बनाना उस चीज को बहुत difficult हो जाएगा, because then it is a very nice theory to have, but that theory may be short-lived. In continuation to this, I also like to highlight things like कि climate change एक story है, no doubt, and it's a very important story. But उससे भी ज़्यादा story जो है एक the context of climate change unfolds many other stories, and which is where we need, like, I'll just probably quote what Prachi said, कि give me the solution, right? Problem हम सबको पता है, right? So अगर वो context clear रहे, and the kind of solutions that we can provide to these individuals, whether it could be as simple as an app, right? This generation knows app better than anyone else. And that app can track their daily energy contribution. And then basis that energy contribution, they are able to redeem certain benefits out of it. Because I will go back to benefits, because that is where probably a great legislation can be created. Whether हम बात करते हैं EVs की, हम बात करते हैं solar की, मैं क्यों लूं? Right? The point is कि आज अगर मेरे पास 100 रुपए है खर्चने के लिए, मुझे पता है, मुझे हमेशा देखना ये है कि मुझे बेनिफिट कहां से मिलेगा. सो बेनिफिट सोचना गलत नहीं है, बेनिफिट किस तरीके से लाके हम उनको देते हैं, वहां पे शायद से स्टेक होल्डर्स को ठीक से काम करना है. And which is where, whether it is media, whether it is tech, whether it is the various stakeholders in the development sector, government, all need to think together in those precise direction is what I feel. Absolutely. And I think I just want to connect what Rachita had raised earlier about curiosity. And I feel media could be not just a platform to share solutions and information, but also build that curiosity, because curiosity then helps people seek solutions. So I hope we can all start using media for that as well. If you don't know the questions, I don't know the answers, let's ask the questions at least. Prachi, we want to hear your experiences before we jump into the questions. I really agree with what just Sandeep said, because we see it as a future problem, and I've seen that thing in most of the people. Even I have an example. A friend was telling me that they just read a headline about the shortage of water, and so they told their parents कि like this is the news and इतने साल में पानी खत्म हो जाएगा, हमारे पास पानी नहीं रहेगा पीने को. तो the parents' response was like, तो ये तुम्हारी problem है. We are not gonna be here that long. By the time this problem will come, we'll be dead. So it's your problem. And I think that is very real. And the other point that we need to attach a benefit to why people should do what we're saying, because it's a very simple part of our nature that we will see the benefit that is for us. Okay, so if I should switch to a CNG vehicle, why should I? And I guess the most of the people who do that, they do it for the mileage or the profit they make, and it's a secondary thought that okay, it's helping nature. And I think it's a sad reality, but it's something that very important, and I think it should be considered, because we need to attach a thing that is benefiting them with the with the factor that we're saying would affect the nature or would help against the climate change. Uh, while talking about all of this, because
when I joined the fellowship, I think one of the experiences that led to a lot of change, and I'm very grateful for being a part of the Change Rooms Fellowship because it has given me a lot of insight. And while thinking about the nourishing now versus the frightening future perspective, I realized that when we think of it as a future problem, we are only going to be scared tomorrow. Okay, and as humans, we tend to close our eyes when we get too scared. So when we see a real problem, we think like, okay, by the end of the century, the temperature is going to be so high that we won't be able to live properly. So we close our eyes because okay, it's a tomorrow problem. We will think of it tomorrow. So while thinking about the nourishing now versus frightening future, I kind of thought about it as frightening now leading to nourishing future. Because if we get scared enough tomorrow, if we get scared enough today, if we think about the problems and the solutions, then of course it will lead to a bit of the fear that will be attached to this whole perspective. But that will only lead to a nourished future. Because unless we think about the problems today, and I think as humans, we work best when it comes from a place of fear and worry. I think we work best under pressure. So, like the Change Room Fellowship has done that for me. And another thing that I realized while I was researching regarding the topic, it was that there are so many NGOs already working, and there are so many companies that are now much aware, but they don't have a greater reach. And I think I came across a lot of locally working companies and NGOs, and their initiatives were very amazing. Like there was a company that was making products out of plastic. You just and they would even take it from you. And there's a lot happening right now. People create brakes, tires, so many things in the world just by using plastic. But I think we need to talk more about those things. Absolutely. बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं, but I think we've also raised a valid question, or a good food for thought कि थोड़ा सा डर क्या पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जा सकता है to also feed this nourishing now narrative, या सारे डर को हटाना पड़ेगा तभी nourishing now narrative create किया जा सकता है. I don't know the answer, but I definitely want to keep this question, and if our audience has any thoughts about this, प्लीज चैट बॉक्स में लिखते रहिए कि डर बिल्कुल हटाना चाहिए या डर को इस्तेमाल करना चाहिए अपने आप को नरिश करने के लिए और पुश करने के लिए एक अच्छे बेहतर फ्यूचर की तरफ. We want to move to the questions, but I have one last bit for all our panelists. What, according to you, are one or two key principles that should shape this nourishing now narrative? एक या दो critical markers या principles. Something that according to you should define the work around building this narrative of a nourishing now dialogue. I'll go first. We'll maintain the sequencing. So I'll go back to what I was saying earlier. I think I still believe that nourishing now, what we should be pushing for is a solution-driven kind of attitude. I agree with Prachi कि थोड़ा सा threat is necessary to inspire action, because otherwise, there is always this visibility of the problem that needs to be there. I mean, honestly speaking, why is the narrative growing so much in the past 1 year or so? Because we're experiencing climate change, extreme events a lot more as well, which is why our curiosity around it increasing and we want to know more. So definitely visibility is something that we need, but I do feel that visibility without showing people the tools to find solutions is also something which is not ethical for a community, which is trying to kind of find a way forward. So from that perspective, somewhere in the climate change space, we do need to kind of dissect the solution, slice and dice it, the messaging that needs to be there, and
highlight the solutions. Maybe we need to have platforms which are actually promoting solutions only, so that we also know the things that we can do, जो चीजें हम actually कर सकते हैं. So yeah, I think that's what I'd maybe like to leave with. Thanks. Nidhi, I think that's a very good question. It got me thinking. And I feel in terms of that value system that we are referring to, I think we should be personally conscious of the fact that whether it is your action or it is your inaction, right? The outcome of it should not be suffering for someone. In whatever, if that value system is in place, chahe wo, it's very small thing, right? Ki aapne paan khaya aur thuk diya, right? And which is a very innate behavior in a lot of us. To understanding the kind of impact it may have, just small things like, switching off the light, switching off the fan, ensuring that you are consuming energy as much as required. I am being very conscious, especially because I have a 3-year-old and he always mimics whatever that I do. Well, everybody says that's what is karma, but I try and better myself every day. And I try and see that, okay, what is that I want to see in him? So thankfully, somebody is there in my life to put my value system in place. But yeah, I think that's something, it's a great takeaway for me, that the action and inaction should not have suffering for someone else, whether it is the generation right now, your neighbor, or the future generation to come. So glad you have your check right in front of you every day. Yeah, but absolutely, on the door. Yeah, I can go next. So 2 quick things. One is focus on the positive rather than the negative. Perception change. जब आप जो अच्छा हो रहा है उसको देख के आगे बढ़ेंगे, तो जो बुरा हो रहा है उसको solve करने की कोशिश भी करेंगे. Same points that Rachita and Sandeep were making. And second point, इन सब बातों में basically जो मेरे लिए key takeaway था कि एक बहुत बड़ा gap है awareness में. Like प्राची और उनके दोस्तों को, उनकी community को बहुत कुछ नहीं पता है. So there has to be an awareness campaign that needs to be driven so that people know exactly something that Rachita was also mentioning briefly, कि सबको पता होना चाहिए solutions क्या है, challenges क्या है, और ऐसा नहीं है कि लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं. चाहे सरकार हो, companies हो, foundations हो, media हो, सब काम कर रहे हैं. अभी दिख रहा है उस काम का impact. तो इससे अच्छा कि हम complain करें, अगर हम action ले तो वो ज़्यादा better रहेगा. And I think Sandeep needs a big applause here for mentioning something extremely important, that future generation को ध्यान रखते हुए वो अपना present steps कैसा होना चाहिए आगे, उनका next step क्या होना चाहिए, even as basic as मैं next minute क्या करने वाला हूँ, revolves around his 3-year-old. That's a big statement. So that's all I wanted to say. Absolutely. Prachi, and then we'll move to the questions. Everything around me is bustling with questions. I know, but everybody's giving me dirty looks, I'm sure, which I'm not able to see. But yes, Prachi. Yes, so I would like to agree with what Ashpreet ma'am said, because yes, there's a huge gap, and as I come from a place, from that same place of unawareness, I think there was a lot of worry, but eventually that leads to carelessness, because if I don't know what I'm able to do, how long am I going to question? How long am I going to ask you, what do I need to do? Please tell me, please tell me. After a while, it's going to stop. And I think one of the issues, or one of the things with my generation, is that we we lose focus, we lose attention very quickly.
So no matter how much we talk about it, we need something that would make us stick to that. And I think earlier that we talked about bringing this conversation into our daily lives, not making it something specific. If we bring it into our lives and talk about the consequences or the nice things, because it's very important to focus on the positive. But if we talk about it in all the ways, then I think it would become a subject that becomes a part of our daily conversation, instead of being a separate conversation about what could the future be like, or what are the problems we will face. I think instead of talking about that the earth will rise in its temperature at the end of the century, we should talk about talk it in a way that the temperature is rising right now. The present response instead of the future, instead of focusing on the future. So I think one of the things that we need to focus on is responsibility and knowledge, because unless we know what is happening, we won't be able to take the responsibility. And as youth, it is most of what we do will make the impact. So I think that is very important if we know what we are required to do. And the second point is going to be benefit, because it's very important to know what it is leading us to. What are the nice things that we will get? I think the rewarding. Okay, if you do this right now, then this is your reward. It's very important to have it, because it will keep the motivation, and it will be in our heads. See, if we do this, then we will have this. So those are the two important things, I think. Thank you so much, Prachi. I think the way you put it is more important. I mean, as important as what you are saying, because the way you are putting it is how I think the entire country probably is thinking, and that's why there is very little connection between what gets discussed in boardrooms and conferences and what actually happens on ground. That disconnect will get that gap will get narrowed once we start talking and discussing it the way you are discussing it. So thank you so much for being here, wearing that hat on this panel. I'll quickly jump to the questions. Thank you so much for already making this space so much more accessible and understandable. And the first question is for Sandeep. As a media house, how do you think different stakeholders can be engaged in building a Nourishing Now narrative? And which is also, I think, connected to what Rachita has raised, that we need to actually bring in different kinds of people together for this dialogue and narrative to actually be built. So as media, how do we do that, Sandeep? Sure. So I would like to start by saying that decisions that are related to energy or climate vulnerability are largely a function of local issues, and this is by research, right? The local conditions, and how media plays an important role. And I'll specifically talk about the digital medium, because that is one medium which liberates the scope of expression, and which is where content which could be in the form of testimonials, your local issues, your local solutions that has driven or impacted something in the environment, by analyzing local context and social factor, journalists or creators can create stories related to climate justice, right? And what I'm saying is already was being done at by some of the most revered journalists around the world, and now it's people like of the age of Prachi, or in the similar space, that everybody is taking their own responsibility towards climate, their knowledge on climate, and bringing that knowledge out in the most contextual manner through media, right? That is one aspect in which you can do it. The other aspect is where I would talk about the people around the world, the group of journalists, the people who are in the journalism space of environment, right? They're already creating a lot of content and research on environment and threat to the environment, which has been going on. The context to set here would be, we need to
think of climate change as not a story, but the context in which so many other stories unfold, right? And those stories could be very, very hyper-local in nature. If we can create those stories and bring those stories out through various video platforms that is available today, I think the message can be sent across a lot faster to the kind of audiences that we want to speak to. Second thing that I would like to speak about is let's go local. माफ कीजिएगा मैं भी इंग्लिश में बोल रहा हूँ, लेकिन जितना हम नेटिव लैंग्वेज में इन चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे, the more vernacular we go, the better the penetration will be. So all the languages, the various journalists, the various creators who are there in the language space should use that medium, should use the power of the language and communicate it through video. Absolutely. Media has a huge role to play. And I think both going local as well as seeing climate as a story in every story. I think that's a really interesting thought. Ashpreet, thank you so much for beautifully highlighting the intersection between climate change and gender. That's what the question says. How do we engage with young people to address this intersection? I think I'm personally curious as well. Yeah, that's a great question. So, जो मैंने बात पहले भी कही थी कि more and more people need to be skilled. ये जो youth है, सारी जो young generation है, जब आप देख रहे हैं अपना career progression, तो आप देखें कि आप कैसे climate sector में ज़्यादा jobs देख सके. तो उसमें से आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ईवीज हो, हाइड्रोजन व्हीकल्स हो, ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, तो आप ये सारे सेक्टर्स देख सकते हैं. जितने स्टार्टअप्स हैं, मोस्टली हम एक्सेप्ट करें कि नहीं, स्टार्टअप इज द ईवी स्टार्टअप इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री. तो इतने स्टार्टअप्स हैं कि जॉब्स काफी हैं. तो अगर आप उस डायरेक्शन में स्किलिंग करें तो यूथ कैन गेट इन्वॉल्व. एंड सेकेंड, youth, Prachi, likes of Prachi can become the mouth for awareness, for lack of a better word. मतलब वो अगर आपस में एक दूसरे से बात करें, अवेयरनेस क्रिएट करें कि हाँ ये आपके बेनिफिट्स हैं, अगर आप मूव करेंगे ईवीज में या ग्रीन टेक्नोलॉजी में, तो आपको XYZ बेनिफिट्स मिलेगा. लेकिन एक और चीज है, जस्ट फ्लैग की, ये जो आप इंसेंटिव्स कह रहे हैं कि आपको मॉनेटरी इंसेंटिव्स मिलना चाहिए क्लाइमेट चेंज के इसमें, अगर आप उस दिशा में जा रहे हैं तो आपको इंसेंटिव्स मिलना चाहिए. वो इंसेंटिव्स हमेशा नहीं रहेंगे, क्योंकि ये इंसेंटिव्स भी जो सरकार से आ रही है, ये इंसेंटिव्स हमारे ही पैसे हैं. हम टैक्सेस भरते हैं, सरकार फिर आगे दे रही है इनको इंसेंटिव्स, राइट? तो ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन होना चाहिए. यस, इनिशियली हमें थोड़ा इंसेंटिव मिलना चाहिए, बट वो फिर खत्म हो जाएगा. तो हमें इस मेंटालिटी से आगे बढ़ना चाहिए. Yes, absolutely. And it's important to see how it becomes a part of all the actions we do. Rachita, this question I'm directing for you. So there are many solutions available, EVage हो या SELCO के भी solutions हो या बहुत सारे और भी जो action हो रहा है. The question is, how do we mainstream this? How do we make it a part of everybody's life? I think if I speak of SELCO itself, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो जैसे आई थिंक पहले जब इंट्रोडक्शन हुआ था तो हम लोग सस्टेनेबल एनर्जी को यूज करते हैं एज अ वे टू सॉल्व सॉल्यूशंस इटसेल्फ. एंड हमारे हिसाब से अगर आप सस्टेनेबल एनर्जी मतलब यूजुअली सोलर, हम सोलर ग्रिड के ऊपर काम नहीं करते. अगर आपकी बिल्डिंग है उसके ऊपर सोलर है, आपका बैटरी है, और आप जितनी एनर्जी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप उतनी जनरेट कर रहे हो, यूज कर रहे हो, एंड दैट्स बेसिकली द एंड ऑफ इट, राइट? बट इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस हैज बीन कि हम किसके साथ काम करें. तो हम एक NGO हैं, विच मीन्स कि हमारे पास ग्रांट मनी आती है, विच मीन्स कि हम सोचते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स को सबसे वल्नरेबल कम्युनिटीज के साथ काम करना चाहिए. बट ऑल्सो देयर इज बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज सब लोग बात कर रहे हैं कि हम प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बन सकते. तो इट शुडंट बी कि हम भी उसी प्रॉब्लम का बन जाए और बोले कि हम 20 साल 30 साल 50 साल तक काम करते रहना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर हमारी जॉब चली जाएगी. So that was happens often in the NGO sector as well, being brutally honest. So हमारा आइडिया है कि हम कैसे वो सिस्टम को सॉल्व करें ताकि टुमारो हम भी दूसरी प्रॉब्लम पे शिफ्ट हो.
राइट? तो अगर हम सेम चीज करते जा रहे हैं, अगर आप मेरे से 1 साल बाद बात करते हैं और मैं हीट के बारे में और इन सब चीजों के बारे में सेम तरीके से बात करती हूँ, प्लीज होल्ड मी अकाउंटेबल, right? So in that space itself, I think one role that all of us can play is, of course, like educate ourselves around the solutions itself, spread awareness around it. I think there are a lot of things that we can do. I still strictly believe that when we are talking about climate, hum solutions as in as I know Ashpreet will agree with me also, हम EV की तरफ से बात नहीं कर सकते, right? We have to say कि हम अपना transportation कैसे most efficient बनाएं और ट्रांसपोर्टेशन को कैसे ऐसे प्लान करें अपना डे टू डे चॉइसेस की हमारा contribution to climate is zero or close to zero, right? That's the first question. So I think as long as we have to imbibe certain approaches as citizens rather than only certain solutions, because solutions भी I hope आप सबके help से या support से या skill or expertise से solutions will keep changing, right? So the moment we kind of look at those aspects, which is I think something that all of us as citizens should be doing constantly. And the other thing that I mentioned, the biggest problem is aap apni skill set is not, you're not seeing that as the biggest thing that you need to use to solve these problems itself and to be part of this change itself. You need to do that. Agar aap bank mein kaam kar rahe ho, finance climate smart solutions, right? क्योंकि why are we saying कि solutions affordable नहीं है? हम स्ट्रीट वेंडर्स के साथ काम करते हैं जो 10,000 की सोलर लाइट खरीद रहे हैं. क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो हर दिन एक्चुअली 10,000 से ज्यादा स्पेंड करते हैं अगर हर दिन उनका देखे, राइट? एनर्जी की बात करें, लोग बोलेंगे सोलर अफोर्डेबल नहीं है. आप बिल पे करते हो, राइट? आप बिल पे करते हो और आपका बिल अगर 5 साल तक देखे तो आपका सोलर बिल्डिंग में जा सकता है, right? So it's all about how we expand our mindsets and how we question our choices, the basic logic of our choices itself, and do actions accordingly. So that's where I feel the role of all of us lies. We, cultivate that thought process itself and take that forward. Wonderful. I think we will have to go back, but let's continue the discussion as much as possible here and in our lives in general. Thank you so much for the lovely thoughts as well as the lovely questions. Fear और fashion दो शब्द आए हैं जिनसे हम behavior change drive कर सकते हैं. I'm leaving you with that thought कि हम कौन से वाले को ज़्यादा भारी बनाएंगे, and hopefully we will move towards a more hopeful, positive future.